If I can ask you, means any you can underline any reason of this debacle? That is in the people's hands. In a democracy, you either win or you lose. So, having been defeated after a long time, we must always take the verdict of the people gracefully. I've always said that the 4.5 crore people of Odisha are my family, and I will continue to serve them in whichever way I can. It has also come to my notice there's been some criticism of Mr. Pandyan. This is unfortunate. As an officer, he did excellent work in many fields in the last 10 years, helping with the cyclone, the 2 cyclones, and with the COVID-19 epidemic in our state. After this good work, he retired from the bureaucracy and joined my party and has contributed largely to that by doing excellent work. He is a person of integrity and honesty and should be remembered for all that. There have been some questions on my health. I want to say here quite categorically that my health has always been fine and continues to be so. You have seen that in the last month I have done hectic campaigning in the heat, and that should be enough to give a verdict on my health. Again, I thank all of you for your attention. Thank you. I'd like to add that Mr. Pandyan has also worked in and helped in health, in education, in sports, and our program of temple restoration. Mr. Pandyan joined the party, has not held any post. As you know, he didn't fight in these elections from any constituency. And I've always clearly said that when they asked me about my successor, I've said clearly that it is not Mr. Pandyan, and I repeat it again, that the people of Odisha will decide my successor. Thank you, sir. Thank you very much. आपण तो मते कोण गामचा कि गुमास्ता कि गुच्छा सबु बेले आपण मते नुआ नुआ ना देके आछंती से गुमास्ता कि गामचा मु आपणक चैलेंज करूची आह्वान दउची आम प्रिय मुख्यमंत्री जून 9 तारीख रे 8 टाइम भितरे 3/4 मेजॉरिटी पाइकी मुख्यमंत्री बाबरे ओथ टेकिंग करिबे जदि मान्यवर मुख्यमंत्री ओथ आपण तो कहउचंती आपणकर हवा चलुची परिवर्तन रा हवा चलुची मु एते दम रे कहउची आम प्रिय मुख्यमंत्री आछंती जदि आम प्रिय मुख्यमंत्री हेबे नहीं मु जो भी भाषण देइची मु राजनीति रु सन्यास नहीं जीबी आपणकर जदि दम अछि आपण तो केंद्र मंत्री मु तो दोने गमछा कि गुमास्ता जो भी आपण कहबे सब बेले आपणकर ये चेंज हो जाए मु तो गमछा कि विनम्रता सका एटा कहि पारुची आपण केंद्र मंत्री अछंती आपण कहउनांती बीजेपी सरकार 3/4 मेजॉरिटी रे आसी जदि आसीबो नहीं ताले मु राजनीति रु सन्यास नेबे बोली कहंतु मु आपण को गोटे कथा कहबी एटी पक्कर निर्वाचन मंडली संबलपुर रे जने केंद्र मंत्री टिया हिचन आपण जानिथिबे 10 वर्ष हला से चेष्टा कले ढेंकानाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रु टिया हबा पे 10 वर्ष 500 थर जाइचंती ढेंकानाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रे बुल्लिले किछि काम कले नहीं नामांकन पत्र दाखल करिबा आगरु
ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଗଲା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବନ୍ସି ଆସିଗଲା ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବନ୍ସି ନାହିଁ ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ବନ୍ସି ଅଛି ଏ ଜଣେ ନେତା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଜାଣିଗଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଆଗରୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କହିବି ଏ ଡରରେ ଆସିଲେ आजिकली से बेसी भाषण दौन और आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन बाबू को अशालीन भाषा रे असम्मान करवा भलिया भाषण दे के आसचन मु गोटे कथा कहबी से व्यक्ति मान्यवर केंद्र मंत्री मु आह्वान दौची आज ये ब्रजराजनगर मट्टी ठिया है के आह्वान दौची आपण जदि साहस अच्छी आपण निजे मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करन देखिबा आपण केते सीट पाइबे देखिबा ना केते सीट पाइबे आपण निज दल आपण ऊपर विश्वास करू नहीं लोक माने केमिति आपण विश्वास करिवे आपण निज दल आपण ऊपर विश्वास करिके प्रार्थी घोषणा करि पारू नहीं मोर चैलेंज होची आपण मु एबे कहूची जय जगन्नाथ विनम्रता सह कहबी आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन बाबू जून 9 तारीख रे 11:30 ରୁ 1 ବେଳେ ଭିତରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ତ ମତେ କଣ ଗାମଛା कि गुमास्ता कि गुच्छा सब बेले आपण मते नुआ नुआ ना दे के आछंती से गुमास्ता कि गमछा मु आपण का चैलेंज करूची आह्वान दउची आम प्रिय मुख्यमंत्री जून 9 तारीख रे 8 टाइम भितरे 3/4 मेजॉरिटी पाई की मुख्यमंत्री बाबरे ओथ टेकिंग करिवे जदि मान्यवर मुख्यमंत्री ओथ आपण तो कहउचंती आपणकर हवा चलुची परिवर्तन हवा चलुची मु एते दम रे कहूची आम प्रिय मुख्यमंत्री आसचंती जदि आम प्रिय मुख्यमंत्री हेबे नहीं मु जो भी भाषण देइची मु राजनीति रु सन्यास नहीं जीबी आपणकर जदि दम अछि आपण तो केंद्र मंत्री मु तो जणे गमछा कि गुमास्ता जो भी आपण कहिबे सब बेले आपणकर ये चेंज हो जाए मु तो गमछा कि विनम्रता सगा एटा कहि पारुची आपण केंद्र मंत्री अछंती आपण कहउनांती बीजेपी सरकार 3/4 मेजॉरिटी रे आसी जदि आसीबो नहीं ताले मु राजनीति रे सन्यास नेबे बोली कोहंतु आज ही फैसला करिबा कोहंतु आपण दम अछि ना आपण ए माटी रस कोता सब बेले कोइ के आछंती 10 वर्ष होला काम करछंती गोटे एनएच टाक ठीक करि पारले नहीं हजार लोकंकर मृत्यु होला आपण नवीन बाबू को अशालीन भाषा रे असम्मान करिकी कोई बार दम कोउट्रु आसिला गोटे पंचायत आपण जीति पार नांती गोटे वार्ड मेंबर जीति पार नांती डरिकी आसिले ढेंकानाल रु संबलपुर आपण को कोउटी साहस आसिला मु एई मटी रो आपण को आह्वान दउची मु राजनीति रु सन्यास नबी जदि मान्यवर मुख्यमंत्री पुणी मुख्यमंत्री हेबे नहीं आपण ए कथा कहि पारिबे कि दम तिले कोहंतु मु आपण को आह्वान दउची जय जगन्नाथ।